Hello students, I hope you all are fine. Students, as you know that yesterday we have started chapter 2, that is acid, base and salt. So students, we have discussed about the definitions. Okay, we have discussed Arrhenius concept. Means Arrhenius ने हमें एसिड के बारे में क्या डेफिनेशन दी थी, क्या उनका कंसेप्ट था. उनका कंसेप्ट था कि वो सब्सटेंसेज जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एसिड्स. और जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं, दोज सब्सटेंसेज आर नोन एज द बेसेज. ओके, सो स्टूडेंट, अर्हेनियस ने हमें कंसेप्ट दिया था कि एसिड की एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेंगे उनको हम कहेंगे एसिड, एंड जो सब्सटेंसेज OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, बेस. ओके, देन स्टूडेंट, यहाँ कुछ लिमिटेशंस थी कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके पास हाइड्रोजन देने को था ही नहीं बट वो एसिड थे, और कुछ ऐसे थे कि जिनके पास OH ही नहीं है लेकिन वो क्या हैं, बेसिस हैं. तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्दर अर्हेनियस की लिमिटेशन को ओवरकम किया था. किसने कवर किया था? लॉवरी ब्रॉन्स्टेड ने. लॉवरी ब्रॉन्स्टेड ने हमें कंसेप्ट दिया था कि जो एसिड्स हैं वो ठीक हैं, वो प्रोटॉन डोनर होते हैं जो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं. ओके, बट बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर. मीन्स जो H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे. तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो ये कंसेप्ट था कि अमोनिया एक बेस है और इसमें OH नेगेटिव आयन है ही नहीं रिलीज करने को, सो हाउ कैन वी से दैट that it is base. So students, Bronsted gave the concept for this one because it is accepting the H positive ion, so it is the base. But students, this one also had some limitation. ब्रॉन्स्टेड ने हमें कंजुगेट एसिड बेस का भी पेयर दिया था. उसने कहा कि कंजुगेट एसिड बेस ये पेयर है, यहाँ पर केवल एक प्रोटॉन का ही तो डिफरेंस है. ओके, यहाँ केवल प्रोटॉन का डिफरेंस है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस थी. अभी तक ब्रॉन्स्टेड ने भी BF3 का मीन्स CO2 का, इनके बारे में इन्होंने भी नहीं हमें अभी कंफर्म किया है कि ये कैसे एसिड्स हैं. हाउ कैन वी से देम एसिडिक इन, they are acidic in nature. Okay, then students, after that एक कंसेप्ट और भी है हमारा, लुइस ने कंसेप्ट दिया था, द लुइस एसिड बेस कंसेप्ट. लुइस एसिड बेस कंसेप्ट. सो स्टूडेंट, लुइस कंसेप्ट क्या है? लुइस ने हमें कहा कि एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं. एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. Means which have tendency to accept the electron. Those substances are known as the acids. And bases are those which has tendency to lose electron, or we can say students, these are the electron efficient species जिनके पास एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज. So students, let's take the example. If I talk about NH3 and BF3, here student you can see, in case of boron, atomic number is 5, configuration is 2 3, means here valence electrons are 3. Okay, so students, if valence electron are 3, so it can form maximum 3 bonds, and it is forming these 3 bonds with 3 fluorine atoms. Okay, yes, but students, you can see, you know very well, one bond contain 2 electrons, so 1 2 3
4, 5, 6. After formation of bond also there are only 6 electrons. There are only 6 electrons. Its octet is not completed till now. Its octet is not completely filled. Okay, it is not completely. So students, it is not completed till now. So it needs 2 more electron. It needs 2 more electron. So from where it can accept? You can see in case of ammonia, we have nitrogen. Nitrogen atomic number is 7. Its configuration is 2, 5. So student, here valence electrons are 5. Okay, means it can form maximum 5 bonds. It can form maximum 5 bonds. So student, NH3, so it is forming 3 bonds with hydrogen. Okay, but there were total 5 electrons. So one pair of electron is non-bonded. It is non-bonded, and non-bonded electrons are, one pair of non-bonded electron is known as the lone pair. So students, it do not have extra electron. यहाँ पर अभी भी 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6, 8. बट बात क्या है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो स्टूडेंट्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है. इन फ्री इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. और कैसा बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. खैर, हम ऐसी बात इस कंसेप्ट पर अभी नहीं जाएंगे. तो यहाँ हमने केवल यही समझना है. यहाँ पर आप देखो, इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट. इफ इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, सो इट इज बेस. It is base. And students, after forming bonds also, its octet is not completed. In case of BF3, means it is acidic. It is acidic. Okay. So students, 3 concepts: Bronsted concept and this concept. Now student, we will see some properties of acid and base. First of all, I will talk about the acid. Acid, one thing you have already done, they release H positive ions simply. H positive ions in aqueous solution, they release H positive ions. In which type of solution? In aqueous solution. What do you mean by aqueous solution? Solution in water. Solution in water. They are Sorin test. Students, you know, all acids we cannot taste. Why? Because acids are categorized into 2. Okay, 2 parts. One is strong acid, and weak acid. On behalf of their reactivity, we divide acid in 2: strong acid and weak acid. What do you mean by the strong acid? Strong acid is that which can dissociate into ions completely. Which can dissociate in ions easily and completely also. Completely. What do you mean by completely, students? Let us consider, students, if I have HCl, okay, if I will take aqueous solution of this, okay, means it is diluted, or we can add some water also. Then students, what will happen? It can dissociate completely into the ions. It can dissociate completely.
Means if we are taking 100 mole of HCl, then it is giving us 100 mole of H plus and 100 mole of Cl negative. You know very well, one HCl after decomposition give one H positive and one Cl negative. So 100 will give 100 H positive and 100 Cl negative. Means if they are decomposing into ions completely, okay, then that type of acid is known as the strong acid. So some examples for strong acids are like H2SO4, sulfuric acid it is, HNO3, nitric acid, etc. These are the strong acid. But student, weak acid. Weak acid are those which dissociate partially, into ions. into ions मीन्स ये 100% कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, इनका केवल कुछ ही पार्ट डिसोसिएट हो पाता है, पार्शियली डिसोसिएशन ये दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट एसिटिक एसिड, दिस वन CH3COOH, this is the acetic acid. If we make solution of this in water, then student, it will dissociate into ions, and after dissociation it will give just CH3COO negative plus H positive, means acetate ion and H positive ions. Because it is releasing H positive ions in aqueous solution, so it is also an acid. But students, here we will put this sign in this way. Reversible means here reaction is taking place in both way, in forward direction as well as in backward direction. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखेंगे कि ये एसिटिक एसिड जो आपका है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाने से हो क्या रहा है, ये एसिटेट आयंस में ब्रेक हुआ है. तो ये साथ साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एसिटेट आयंस, जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये डिकम्पोज होकर हमें एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस दे रहा है. लेकिन उसके जस्ट अपोजिट ये दोबारा से आपस में कंपाइल होके, दोबारा आपस में ये जुड़ के ये क्या बना रहे हैं, फर्दर कंडेंसेशन से हमें ये फिर से क्या दे रहे हैं यहाँ पर, एसिटिक एसिड. सो तो स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और साथ साथ में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट यहाँ पर हुए जा रहा है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो कभी भी हमें कंप्लीटली डिसोसिएशन मिल ही नहीं पाता. सिंपलर कंडीशन में. अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो अदर बात है कि भी हम रिचेटिडियल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वहां पर, वो डिफरेंट थिंग है. ओके, अभी 10th लेवल तक हमें उन पर नहीं जाना, बट सिंपली अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं तो यहाँ पर इसका पार्शियली डिसोसिएशन ही होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है, और साथ में जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं ये फिर से कंपाइल होकर, फिर से ये कंडेंस होकर हमें रिएक्टेंट को दोबारा से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसीलिए 100% डिसोसिएशन हो ही नहीं पाता. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड. क्या कहेंगे, वीक एसिड. आई होप स्टूडेंट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितना हमने एसिड लिया वो 100% डिकम्पोज हो जाता है, 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. बट वीक एसिड में 100% डिसोसिएट नहीं होता, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ओके स्टूडेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, साथ साथ में प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. देन स्टूडेंट्स, on behalf of their sources, there are further two types of the acid. Strong acid.
Okay, one is the this one, and on behalf of their sources, students, further acids are divided into two: organic acids and mineral acids. Organic acids are or I can write which are edible, which are edible. Students, they may be obtained from the nature. They may be obtained from nature. Means obtained from, can be obtained from fruits and vegetables. Fruits and vegetables. Okay, like students, if I talk about lactic acid, from animal also they can be obtained. Like lactic acid is a mineral acid. Okay, it is found in milk, curd. Again, if I talk about students, oxalic acid student in tomato, in spinach. Okay, then students, if I talk about the citric acid is present in lemon, mango, orange. Tartric acid. Tartric acid is present in unripe mango. Unripe mango, tamarind. In tamarind also. Okay, students. Some more examples also, like if I talk about acetic acid, it is present in vinegar. Formic acid, it is present in nettle sting. Okay, students, these which we can eat also. So these we can distinguish, we can identify by testing only. Okay, these can be obtained from nature, can be obtained from fruits, vegetable, and we can use for edible purpose also, like milk, curd, tomato, spinach, lemon, all things. These we eat. Okay, students. So these are the mineral acid. Sorry, these are the organic acid, natural acid. These are. But students, mineral acids are the strong acid. They cannot be obtained, they cannot be obtained by nature. They cannot be obtained by nature. They can be synthesized. They can be synthesized in laboratory. Can be synthesized in laboratory. Okay, students, all strong acid like HCl, like H2SO4, like nitric acid, all these are the mineral acid. All these are the mineral acid. So, students, we can taste the organic acids, but these strong acids and mineral acids, these cannot be tested. This cannot be tested by eating. Okay, so for detection of them, we use indicator. We will use indicator. Indicators. Indicators are those substances which change their colors in acidic or basic solution, means which indicate, which tell us about the solution, either it is acidic or it is basic. Okay, so students, today we have discussed about the Lewis acid
and base concept also. What is this? Then student, we have discussed about strong acid, weak acid. What do you mean by this one? Okay, so organic acid can be taste. You can see lemon, it is sour in taste. Okay, tomato, curd, all these are द सॉर, सभी खट्टे हैं, सभी क्या हैं, खट्टे हैं. तो इसलिए ये हमारे क्या किसको दिखा रहे हैं, हमारे ये किसको, एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं. बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो मिनरल एसिड्स हैं, इनको हम ईट तो कर नहीं सकते, ईट तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इनकी डिटेक्शन के लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर्स. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. टाइप्स ऑफ एसिड्स and concepts of acid given by different scientists. So thank you. Have a nice day.